Hello students, I am Neil sir, your maths faculty. Today we discuss the new chapters of the standard 10 with the probability. Understand very easy chapters. Already you taught learn in standard 9 of the basic concept of the probability. Okay, so let's start our chapters. Chapter is normally our chapter is chapter number 15, right? Probability. Probability. Okay, class 10. Class 10. Okay. So what is the probability? First, normally. So we know that. So probability is a concept. Okay, probability is a concept which numerically measure the degree of the normally degree of the normally degree of certainty of the occurrence of events. It is called the probability, right? It is called the probabilities, right? So probability is a concept which the numerical measures of the degree certainty in the occurrence of events. So when happens the any events, right, is called the probability. तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको बहुत सारी टर्म्स जो है उसको पहले समझना पड़ेगा. ओके, तो उसमें जैसे कि एक्सपेरिमेंट है, इवेंट्स है, क्या कहते हैं, उसके बाद ये डेफिनेशन हमें क्लियर समझ में आएगी, राइट? तो इसके लिए चलो, सो लेट्स सी दैट फर्स्ट इज द एक्सपेरिमेंट. ओके, experiment. Let's start. So experiment, that means an operation. Okay, an operation, simply an operation which can produce some, वर्ड समझना, some well defined, बच्चों, well defined outcomes या रिजल्ट भी कह सकते हो. एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, ओके, इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट. अंडरस्टैंड? कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो बहुत सारे रिजल्ट या सम वेल डिफाइंड रिजल्ट या आउटकम प्रोड्यूस करता है, राइट, इज कॉल्ड द एन एक्सपेरिमेंट, राइट? तो चलो, इसी बेस्ड आपको और एक चीज समझनी है कि नॉर्मली हम लोग जो आप सम पढ़ोगे उसमें क्या लिखा आएगा. ओके, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर. ओके, तो इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, is a random
random experiment, right? Here random experiment, that means an experiment बच्चों एक्चुअल में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो आप जानते हो कि कोई आपका ऐसा एक्सपेरिमेंट, राइट, जिसमें आपको कौन कौन से आउटकम्स आने वाले हैं ना वो पता है, बट आप उसका एग्जैक्ट रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दी दिस काइंड ऑफ द ओके एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द रैंडम वेरिएबल। क्या दो चीज है, आउटकम सारे पता है बट कौन सा आएगा एग्जैक्टली ओके वो नहीं पता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ओके तो आप उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हो। ओके सो एन एक्सपेरिमेंट इन विच all possible outcomes are known and the exact outcomes cannot predicted in advance such an experiment in advance is called a random experiment, is called the random experiment, right? Just see the example of this first of that, students. First example is tossing a fair coin, right? बच्चों जो सेकंड एग्जाम्पल है ना वो आप कह सकते हो थ्रोइंग या रोलिंग। rolling and unbiased die, यानी पास आप जानते हो। एंड ड्रॉइंग अ कार्ड, फ्रॉम a pack of well shuffled cards, right? They are the example of the random experiment, right? Understand this? So next terms is, तो कौन कौन से रैंडम एक्सपेरिमेंट है? तो थोड़ा इसका डिस्कस कर लेते हैं, राइट? तो फर्स्ट इज बच्चों tossing coin. Now so the one times tossing a coin, so that means here number of outcomes
आउटकम्स इज इक्वल टू 2 रेज टू n। तो हम लोग 1 टाइम्स कर रहे हैं बच्चों, तो 2 रेज टू 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 2। ओके, सो आउटकम्स आर, okay, outcomes are simple. Toss the coin head and tail, right? So count this 1 and 2, understand? Okay, then after 2 times, tossing a coin 2 times, right? So simple, number of outcomes, that means 2 raised to at 2 times, okay, 2 times the 2 raised to 2, you got the 4. So outcomes are, कैसे करेंगे बच्चों? तो बहुत सिंपल है, और रटना मत मानना, कभी कभी मिस्टेक हो जाएगी, इसके लिए पैटर्न सीख लो। तो योर रिजल्ट इज बिकम नाउ, तो फर्स्ट एच एच, राइट, कार्टेशियन पैर, एच टी, देन टी एच, and then after tt, understand? Count this 1 2 3 and 4, right? Understand this? Okay, now 3 times cos simultaneously 3 times, toss the coin simultaneously 3 times. So number of outcomes is equal to 2 raised to 3, then you got 8. So outcomes are तो यू मल्टीप्लाई दिस, मतलब जो 2 आए उसको आप कर सकते हो और एक रिजल्ट एच टी करके, राइट? सो द 3 टाइम्स first of that, okay, so 3 times, that means the, you know that h h h, ऐसे बच्चों h h h सबके साथ ले लो पहले, तो h h h, okay, then h t h t h h and t t h, right? Then after t, so students h h t, okay, h t t, t s t and t t t, understand this? Okay, so 3 times count this, total is a okay 8, understand this? Okay, so now you remember these points, okay? So अगर 1 टाइम टॉस कर रहे हो तो आपको कितना मतलब रिजल्ट मिल रहा है 2, राइट? सो द आउटकम्स ओनली द 1 टाइम्स you get the result, right? Okay, now 2 times, okay, so 2 times this, so outcomes are, there are the 2 times. Okay, 3 times, so outcomes are okay, they are the experiment, right? Got it? Now another, so now another is a die throwing, yeah, rolling die. So the total number of outcomes is 6 raised to n, right? Okay, let's start. So 1 time, number of outcomes, 6 raised to 1, 6 raised to 1, that means 6. So the outcomes are so आप जानते हो थ्रो द डाइस, तो क्या कहते हैं, फर्स्ट सरफेस पे, ओके, अपर सरफेस पे जो नंबर कितने आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, सो 1 2 3, राइट, 4 5 and 6, understand this? Okay, so total 6. Now 2 times,
2 times, right? So therefore number of outcomes is equal to 6 raised to 2, that means 36. So how can you find this? So 1 2 3 4, okay, 5 6, one time toss, okay, 2 times 6, 1 2 3, okay, 4 5 6, so is equal to, right, first that here, right, the first 1 1, okay, 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6, right? Then after 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, right? Similarly 3, okay, and join this all 3. So write down all the pair of for 3. So again 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6. 4 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, right? Now 6 1 6 2, similarly 6 3, okay, 6 4 6 5 and 6 6, right? Okay, count the students, total 36, right? So they all are the random experiment. Suppose you got the sum of the two dice, okay, is result is 4. तो देखो जिस मतलब जिस डाइस का टोटल 4, उसको इवेंट कहते हैं. आप क्या कहते हो? इवेंट, राइट? फिर टॉस द कॉइन, या फिर मतलब गेटिंग द हेड्स, गेटिंग द टेल्स, all are the result of the normally the events, right? It is called the events, right? तो चलो देखो, तो एक्चुअल में इवेंट्स क्या है बच्चों, ये तो आपने देख लिया. ओके, अब और एक चीज यहाँ पे करते हैं बच्चों, वो है नॉर्मली कार्ड्स. ओके, कार्ड्स, तो कार्ड्स कितने पता है ना आपको? 52 सबसे पहले, वो चीज एक तो समझनी है. ओके, अब शुरू कर रहे हैं हम लोग कार्ड्स के अंदर. तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है, तो हम लोग इसको पहले बना देते हैं, क्योंकि वो याद रखना पड़ेगा कोई भी कार्ड वाले सम के लिए आपको. ओके, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं अब इसको यूज कर लेता हूं. हार्ट, राइट? चलो, इसके बाद है वो डायमंड. स्पेड, ओके, एंड क्लब. तो इसको आप क्या बोलोगे बच्चों? सूट. क्या बोलोगे? सूट. सूट बोले तो 4, राइट? हर एक में कितने कार्ड्स होते हैं? 13 13 13 एंड 13, राइट? ओके, अगर यहाँ पे आपको बताए कि कलर्स का है, राइट?
राइट, एक मिनट। चलो कलर्स का है तो आपको याद रखना है दो ही कलर्स है, राइट। कलर्स कितने हैं? 2, ऐसे याद रखना है। एक है ब्लैक और एक है रेड, राइट। तो अगर उसके कार्ड कितने होंगे तो 26 26, राइट। ओके, तो इतना आपको पता चल गया, राइट। अब फेस कार्ड की बात आती है। किसकी बात आती है? फेस कार्ड। तो फेस कार्ड्स वो भी आपको समझना है नॉर्मली। तो फेस कार्ड्स, तो फेस कार्ड्स बच्चों होते हैं कितने? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। कैसे 12? बराबर है, तो बहुत सीधी बात है। अब मैं यहाँ पे आपको इंडिकेशन दे देता हूँ। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो किंग, फिर है क्वीन, राइट, एंड जैक, राइट। तो 4 किंग होते हर एक सूट के, 4 क्वीन एंड 4 जैक, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 12 बच्चों। तो ये फेस कार्ड्स है, आपको ये पता होना चाहिए। और बाकी बचे ओके 50 माइनस 12, अगर आप कर दो 52 माइनस तो 40 है, वो फेस कार्ड नहीं है। चलो ये चीज आपको अब समझ में आ गई है, राइट। अब आपके लिए एक बहुत सीधी बात समझा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले ओके, तो नॉर्मली राइट, ओके, ओके, हार्ट, डायमंड, ओके। अब यहाँ पे मैं स्पेड, राइट, स्पेड, एंड दिस वन इज क्लब, राइट। तो ये आपके 4 सूट हो गए, अंडरस्टैंड? ओके, तो ये बेसिक आपका नॉर्मली जो भी था वो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है, इसीलिए आपको पहले से ही बता दिया मैंने। चलो नाउ अब जो है वो क्वेश्चंस है, ये अब शुरू होगा इवेंट। तो व्हाट इज इवेंट? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब है कि आप हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी समझनी है तो इवेंट भी समझना है। तो इवेंट क्या है? ओके, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स याद रखो, ऑल पॉसिबल। सो द कलेक्शन ऑफ all possible outcomes, ओके, ऑल या सम, सबको कह सकते हो। ओके, आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। तो मैंने बोला ना, गेटिंग हेयर, गेटिंग टेल्स, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ गर्ल इन द फैमिली, इट इज ऑल्सो द इवेंट्स। ये सारे इवेंट्स हैं, राइट। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ते बच्चों। इक्वली लाइकली इवेंट्स। चलो बच्चों, इक्वली लाइकली, तो इक्वली लाइकली इवेंट दैट मीन्स,
what है a given event, a given number of, a given numbers of events are said to be equally likely, equally likely if normally, okay, if none of them is expect, okay, none of the expected to occur, occurs, okay, expect to occurs in preference of, in a preference to the other, preference to the other. That means equally likely, that means you throw the you toss the coin, you get the result head and tails, okay, for one times. So you know that the probability is same, 1 by 2, 1 by 2, right? So this is the equally likely event. You throw the dice, you get the any numbers, the probability of any numbers is 1 by 6. It is also the equally likely event. So therefore it is the first clear the, okay, result is probability of any event is between, okay, 0 to 1. So P of E less than or equal to 1 is very most, okay, importance result of the probability. The probability is always between 0 to 1, okay, 0 to 1, okay, not between but 0 to 1, right? 0 भी हो सकता है 1, but not more than 1, not less than 0, right? Okay, then after, okay, then after, now it is the impossible event. Which one? Impossible. Impossible event. The probability of, the probability of an event which is impossible, to occur is 0. Such an event is called an impossible event. Okay, it's simple. Okay, क्या लिखा है बच्चों के, इवेंट इज इम्पॉसिबल टू अकर, ओके, इज 0, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट. दैट मीन्स P of, very important result when P of E is equal to 0, okay, where E is n okay, is an impossible event, right? Okay, importance. For example, a student get the 21 marks out of 20 marks examination, right? It is also the impossible event. It's simple examples. Now
So this is very most important result. Okay, P of E is equal to 0, यानी probability of any event, right, any event is 0, then simple E is impossible event. जब 0 है तो मान लो कि वो impossible event है, और impossible event है तो उसकी probability 0 है. ओके, तो importance result हो गया. ओके, let's start here. Sure event या certain event. Sure event, ओके, या फिर certain event. Now, so simple, the probability of an event, the probability of an event is sure or certain to occur, okay, is one such an event is called sure या certain events, right? So simple here, very good result. When the P of E is equal to 1, where E is a sure event. Sure. So it is a very important result. Okay, again, because this is the sure events, right? Yeah, also the say the certain event. बच्चों, ओके, तो ये चीज भी आपको इनडायरेक्टली 1 मार्क्स के लिए याद रखना है. ओके, तो ये आपका काम हो जाएगा ऐसे, एमसीक्यू फॉर्म, फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म. ओके, ऐसा कुछ भी आ सकता है. चलो, क्लियर. नाउ देन आफ्टर, तो अभी हमने जो भी इवेंट्स और सब देखे इम्पॉसिबल इवेंट. अब द वेरी इंपॉर्टेंस, ओके, इसका भी हमने क्या कहते हैं, एक इलस्ट्रेशन देख लिया, एग्जांपल देख लिया. अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री. Okay, but it is a complementary event. So let E be an event and not E be an event and event which is occur only E cannot be occur. ओके, क्लियर. यानी नॉट ई जो है ना वो बच्चों कब पॉसिबल है, व्हेन द ई ना हो तो, यानी पास इवेंट इज इक्वल टू द पास इन एग्जामिनेशन. ओके, तो ई डैश मतलब, या आप बोलते हो नॉट ई, दैट मीन्स फेल इन एग्जामिनेशन, राइट. ओके, सो वी नो दैट इट इज डिनोटेड बाय, मतलब by complementary of events. It is denoted by a not E, right? Not E, or probability of E bar, right?
So the very good result here, P of E plus P of E bar is equal to 1. Okay, the first importance result are there. Okay, the first importance result are there. And from this, okay, from this P of not E yani E bar is equal to 1 minus P of E, right? So remember for this all results. Okay, so definitely you have this solve the whole chapters here. Then after most important classical definition or classical approach of probability. So P of E is equal to, okay, number of favorable outcomes of गिवन इवेंट, मतलब जो आपको ढूंढना होता है उसका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट? चलो, क्लियर स्टूडेंट्स? Right, so this is all the theory concept of this chapter probability. It is very easy chapters. Okay, in next video we solve all the examples, okay, of our only one exercise in this chapter. Okay, so next lectures, this is the only the sums मतलब question the of exercise. हम लोग उस पूरे exercise जो है, okay, वो solve करेंगे. Okay, हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं, ओके, एक नया टूल्स है उसका यूज कर रहे हैं वो, जैसे आपको पढ़ने में थोड़ा और इंटरेस्ट आए, मजा आए, राइट? तो नॉर्मल और प्रैक्टिकल जो है उस टीचिंग से थोड़ा मतलब थोड़ा अलग है. ओके, आई थिंक आपको मजा आया होगा. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के लिए. अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में इनपुट करते रहिए. चैनल को लाइक करते रहिए, ओके, सब्सक्राइब करते रहिए ताकि वीडियो आपको मिलते रहे बच्चों. अंडरस्टैंड? ओके, तो चलो, टिल देन एंड बाय बाय.